सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारिइल खलाइक़ अजमईन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सलावत। Dear brothers and sisters in Iman, as all of you know, we are gathered tonight to commemorate the loving memories of a mother and to have this majlis for her Issal-e-Sawab, mother of our brother Itrat Hussain Sayyid, Marhuma Maghfura Sayyida Halima Rizvi Binte Sayyid Niaz Ali Shah Rizvi. So I request you all to please recite a Surah Mubarakah Fatiha for her Issal-e-Sawab masbuqatan bis salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Please recite a loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Whether we talk about life or we talk about death, basically we are talking about the same reality. Life and death, they are only the two sides of the same coin. You look from one angle, it is life. You look from the other side, it is. And life itself brings a message of death also with it. Those who look at it with open eyes. Because आना दलील जाने की है.
anybody who has come will go. Only those won't go who have never come. But anybody who has come, he has to go. So when we celebrate the life, we overlook the death. And many times we don't feel that this life, naturally, there is another phase for it, and that is death. In order to understand this concept of life and death, every time, whenever we have this Majlis Issal-e-Sawab, we talk about it. And every time we talk from little different angle to understand and to improve our understanding of this concept of life or death. Today, I have chosen a brief surah of Quran known as Surah Al-Asr. I believe everybody in the gathering knows that surah by heart. Matter of fact, most of us, we recite in our prayers because of convenience. We have got the habit of reciting these very short surahs in prayer, and this is one of those surahs, Surah Al-Asr. It's chapter number 103, 103, and has only 3 verses. It is written only in 2 lines. In some Qurans with the big size, it is written even in 1 line. It's a one-liner. But if you find the smaller size of Quran, then it is written in 2 lines. And this is the beauty of Quran. It's really Quranun Majid, a book which is very majestic and very eloquent and very powerful, that conveys message in very concise manner. Within few words, Quran explains the concepts that for us, if we want to convey those things, we may need a book. But Quran conveys that just within counted words, within a few words. Among the scholars, there was, I believe there were 2 scholars, very distinguished scholars in Shia and Sunni communities, and they are always quoted in our books of tafsir. When you read the tafsir of the surah, basically both are saying the same thing. The Shi'i scholar is Khaja Nasiruddin Tusi. Khaja Nasiruddin Tusi was the teacher of Allama Hilli. You can understand now his caliber. One of the most comprehensive scholar in Shi'i tradition. Very few scholars we had, like Khaja Nasiruddin Tusi or Allama Hilli or Sheikh Bahai. These were scholars in Deen and Dunya both. He was a scholar in linguistics, he was a scholar in Quran, Hadith, Fiqh, philosophy, and then he was a very accomplished engineer, expert of math, and many other physical sciences. A very accomplished scholar, Khaja Nasiruddin Tusi.
he made a comment about this surah. He says, God forbid, if something would happen and if accidentally we lost the whole Quran. The whole Quran was lost. But fortunately, only one surah was left. Alaykum salam. And that surah was Suratul Asr. He says, we have not lost anything. We have not lost anything because Quran in its entirety, in concise manner, it is mentioned in this surah. This surah is gist of whole Quran. Everything what we find in Quran is mentioned in brief in Suratul Asr. That's a comment of Haja Nasir Tusi, and a similar comment is mentioned in the Sunni books of Tafasir by Imam Shafi'i, who was also a very great and comprehensive scholar of language and fiqh and usul and other sciences, very accomplished scholar, and he has a similar quote that this surah consists everything, whatever is mentioned in Quran. So my brothers and sisters, very briefly, remaining within our time, we will review this surah and try to learn some lessons. Allah subhanahu wa ta'ala begins this surah with qasam. Bismillahir Rahmanir Rahim, wal asr. I swear by asr. Vav in Arabic language is used for many different meanings. Just simple this letter Vav. Vav, it comes in the meaning of and. It comes in the meaning of qasam, as we say wallah. Have you heard Arabs always saying ay wallah every time? And wallah, I don't lie, and whatever I'm saying, wallah, billah, and tallah, those are the qasams. So vav comes for qasam also. Wal fajr, wal layalin ashr, or wal layl, or wal dhuha. Many times in Quran, this vav is used for qasam. Wal asr, Allah subhanahu wa ta'ala wants to say something with emphasis by swearing. I swear by al-asr. Now, scholars have variety of opinions that what exactly this word al-asr means. Al-asr, if you go to its root word, asara, ayn swad ra, means to squeeze something. To squeeze, this is called asara. That is why when you squeeze something and whatever the material, its gist or essence comes out, this is called usara. Usara. Because you squeezed and now these drops or whatever this material is coming out of it. This is called usara. Nachod in our language, when you squeeze something after washing, this is the same root word. And then whatever comes out, this is called usara. That's its literal background. The time of Asr, we have Asr prayer. Why Asr is called Asr? They say it is the same thing for the whole day. You spent your day in work, and now at the end, the gist of your whole day comes out at 5 o'clock, because 9 to 5 you worked. The time when you conclude, the time when you finish,
And now you close your register and you see what is the outcome. What was the output for today? The project was complete, how much work was complete, or how much money was made if you are standing at a register. So this is why that Asr time is basically end of the day. After that, everything starts kind of winding up, slowing up, closing down, gets dark, and then you reach to the Maghrib. And if we remember old times when there was no electricity and there were very much dusty streets and dusty neighborhoods, so by the Asr, it would actually, you would see that it's getting dark. And this is why people would close their work, close their job. So Asr is basically that particular time of closing when a businessman sits and he makes his hisab and kitab and he sees how much was gain and how much was loss. And since this was the time to determine gain and loss, Allah subhanahu wa ta'ala is giving us another perspective. You are worried about gain and loss of today's business. Let me tell you gain and loss of your entire life. So there is a relevance of this word Asr, because Asr was the time when people would sit down and would evaluate or count their dirham, dinar, pennies and dollars and see how was the business today. So, wal Asr. So, this is because of that. Some scholars, they said that yes, it was in that meaning and it is still in that meaning. But here, particularly in this surah, Asr means time, means history of mankind, means time from the beginning until today or until the last day. This whole time, zamana, is in the meaning of Asr. Allah subhanahu wa ta'ala is swearing not only that time of prayer, but He is talking about something bigger than that. He is saying that I swear by the time, meaning the time of this world or the history of this world bears the witness and gives the testimony. If you look in the whole history of mankind, which is a collection of time, wal asr innal insana lafi khusr, that if you look at the history of mankind, then the reality is that al-insan was in loss. So the statement is made by looking at the history of mankind, history of al-insan, beginning from Adam, coming to the time of Khatam when Quran was being revealed, and of course until the end. Allah subhanahu wa ta'ala is declaring that man, we are translating man in English, but Quran is not saying Rajul, Quran is saying al-insan. The humankind, al-insan, wal asr innal insan, whether it is man or woman, al-insan lafi khusr, insan remain in loss. And we will talk about that, my brothers and sisters. For many of us, it is very difficult to understand because our concept of gain and loss is not clear. Our concept of success and loss is very limited. We have to redefine
and try to understand better what is success and what is failure, what is gain and what is loss. For most of us, success, when we look around and say somebody is very successful, somebody with degree, somebody with good job, and somebody that who was able to make a good house or purchase a good house, big house, one or two, a few cars, and with some bank balance, that makes the man or that woman. एक सलवात पढ़ लीजिए मेरे के बाबा अहलन व सहलन. Kindly recite another salawat. So my brothers and sisters, when we look for success or examples of success, for most of us, a man who has a degree, a man who has a good job, a man who has a good home, good car, some bank balance, some good retirement fund, and a few other things will make him a very successful man. That is the criteria of success. Because to us, life is only this 60, 70, 80 years. While if you are a regular reader of Quran, and if you have your eyes on Quran, then you know that Quran doesn't look only at this lifespan of 60, 70 or 80 years. Quran says that we will decide about success or failure at the day of judgment. As in Farsi they say, Khandan an bawad ke az phul guzasht. When you cross the bridge and you reach on the other side of the river, then you can celebrate. You are still on the bridge. Khandan an bawad ke az phul guzasht. So it's too early to declare success. Just by having some real estate and some bank balance and some good job. Nobody is against these things. These are all good things. We must have. We must have a good degree, good education, good house, good job, good money. These are all necessities of life. But these things don't make us successful. Success comes, this is collectively living successfully in dunya and akhirat. Success is determined by Allah subhanahu wa ta'ala and His angels. And when we died, and then when we raised up again, and then when they tell us that now you have passed the test, everything is fine, and now here you enter in Jannatul Firdaus, that is the time to declare the success. That is the time to declare the success. Before that, there is no concept of success. I will talk about that in the light of ek salawat aur padh lijiye baba. So my brothers and sisters, wal asr innal insana lafi khusr. Who is declaring that al-insan, if you look at the history of al-insan, if you look at the history of nations and communities who lived in this world, and if you want to make one observation about mankind in this dunya altogether, then collectively, if you want to make one statement of humanity, then humanity was in loss.
humanity remained in loss. Still, for some of us, it is very difficult. How come Quran is saying that humanity, mankind, insan, brilliant, intelligent, hardworking, insan which has conquered this dunya, built these high rises, has entered in space, built these modern cities, and you are saying that insan has failed? My brothers and sisters, success and failure is determined with the purpose. If you achieve the purpose of your creation, then you have succeeded. And if you failed in achieving the purpose of your creation, no matter what you did, you failed. If today was the test of English, and I entered in the examination hall and they gave me the English paper, and I wrote the thesis in physics better than those Nobel Prize winners on physics, and didn't answer even one question of that English paper, what do you think about me? That I failed or I passed? I didn't answer even one question which I was supposed to answer. And I wrote marvelous paper on physics. But you were not asked for that. That was not the test. The test was to answer these English questions. The point is, why did Allah subhanahu wa ta'ala place you on earth? Why did He place you on earth? Why did He create you? If you have succeeded in accomplishing that task, then of course you are successful. But my brothers and sisters, if we didn't answer and if we didn't do that, no matter on side whatever we have done, it's not going to make us successful. It is just like you have gone to the Washington, for example, to attend a conference. These physicians, doctors, engineers, businessmen, they have their professional conferences. And this conference was in Washington. You went to Washington to attend the conference. It was your professional conference. Maybe it was needed for your profession. And when you landed in this beautiful hotel, you liked this hotel so much that you spend all your time just enjoying the hotel. And you even didn't bother to go to attend the seminar or the conference. Kept watching the TV, kept playing the games, enjoyed their swimming pool, their exercise hall, and you enjoyed that hotel, and maybe you did so many things. Even you have prayed 1,000 rakat prayers. And maybe you have done so much other charitable work and some good work. You saved some people here and there, and you did everything, but you didn't do what you were supposed to do. You went to Washington to attend your conference. So my brothers and sisters, we need to always remember why we are here, why we are sent in this dunya. And then we are responsible to Allah subhanahu wa ta'ala, who will determine that who is successful and who is not successful. While we are talking about this, there is a word a few days ago I saw. They say some people are very much for ibadat. They think that ibadat will help them to succeed, while it is not ibadat, it is abdiyat.
It is not ibadat which will save you. No matter how much ibadat you do, but if you don't become abd, and if you don't become obedient to Allah subhanahu wa ta'ala and obey Him in each and everything in your life, then only your 5 prayers and your fasts and your hajj and your ziyarat and your ibadat is not going to help you. You have to become abd. Ji. Nobody can do more ibadat than shaitan. He was abid, but he was not abd. So my brothers and sisters, we need to understand, wal asri innal insana lafi khusr. It is not a Maulana who is making this comment. We can say, oh Maulana, लोगों को तो वैसे ही लोग अच्छे नहीं लगते, ये तो हर किसी को फेल करते हैं. No Maulana is making this comment. Even Prophet is not saying that. No Imam is saying that. This is Wahy Munzal. This is Quran. And the surah everybody knows by heart. Wal asr innal insana lafi khusr. यानी इंसान मिन हैसुल इंसान, अगर इसकी तारीख पे नजर की जाए आदम से लेके आज तक और इस पूरी टोटल ह्यूमन हिस्ट्री को सामने रख के अगर फैसला किया जाए कि ओवरऑल इंसान कामयाब रहा या नाकाम रहा, तो खुदा इसको ये कह रहा है कि इंसान ओवरऑल नाकाम रहा. We all know that insan in his individual capacity in some areas of life, particularly in this worldly aspect of life, if we mean success, degree, job, house, family, and some money, then yes, many people were successful. But that is not the criteria. Criteria is that you are here to seek the rida and khushnudi and the pleasure and the passing marks from Allah subhanahu wa ta'ala. That as the last ayat of Surah Al-Fajr says, Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. That is passing. That Allah subhanahu wa ta'ala calls, oh nafse mutma'inna, time has come. That now you come back while you are razi from me and I am razi from you. Radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannat. Now you enter in my servants here and you enter in the paradise. That is success, my brothers and sisters. In Nahjul Balagha we have from Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam, where he says that never sell yourself for little or less than what really is the price of yourself. And then he says the price of yourself is only Jannat. Never sell less than that. This 100,000, 500,000, 1 million, even the government, takht, taj, whatever, which you consider are the price, no, they are not your price. You are priceless. But if you want to sell out yourself, then sell only for the pleasures of Allah and Jannat. The pleasures of Allah, Ridwanun min Allah, is even more than Jannat. If you want to buy something even better than Jannat,
because Jannat will then come by itself and it will be your property. But that is the Ridwanun min Allah, that the pleasures of Allah subhanahu wa ta'ala. That is your price. That should be the goal. So my brothers and sisters, wal asr innal insana lafi khusr. Khusr in Arabic means loss. ये उर्दू वाला खुसर नहीं है, अरबी वाला. In Arabic, khusr, khusran means loss. Wal asr innal insana lafi khusr. This is meaning the statement of someone who knows the best, who is unbiased, who has the each and every detail in his knowledge, and nobody can doubt his expertise or his judgment. Innal insana lafi khusr. What is khusr? Ulama, they try to define it. They say when you are giving more and receiving less. This is khusr. You give better product or better service or more precious thing, and what in return you receive is inferior. Then this is khusr. You paid for something that its value is $100 and you are receiving something which its value is only $10. So it's khasare ka sauda, घाटे का सौदा. $100 दो और $10 का सौदा खरीदो. So that is called khusr, that you are investing something of the higher value and you are getting back something which is inferior and less in value. Every shrewd businessman, every intelligent businessman, when they do the business, everybody knows what they want to do. That when they invest, they want high income, they want high return. This is how you go and you ask the experts, I want to invest, I have some funds, I have some stocks, I have some money, I want to invest. And when you invest, you want to invest in accounts or in businesses where you invest less and you get more. Then you are successful, you got profit. Now my brothers and sisters, Allah subhanahu wa ta'ala is telling every human being that since you are in loss, but if you want to come out from this state of loss, and if you want to be successful in your business, then here is a formula. It's a formula, is 4-point formula. 4-point formula, and here are the 4 accounts, 4 businesses, 4 accounts available for you. If you invest here, you will be successful. And what are those 4 accounts, 4 businesses? Allah says, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Nobody should think that, oh, these are abandoned accounts. If I will invest my life, my time, my resources in these 4 accounts, I will not get anything. No, my brothers and sisters. Never think that you have to quit your job, or you have to abandon your family, or you have to just abandon this dunya. You are doing most of these things anyhow. The only problem with us is that we are not consistent. We begin and then we leave it in between. We get motivated, we get inspired, and we start doing right things, and then we think that
We have done so much good. And I am not a fanatic Muslim, I am moderate Muslim. And you know the definition of moderate Muslim is that 50-50. 50% नेकियां, 50%. That makes me moderate Muslim. That is abuse of word. That is not the definition of modern Muslim or moderate Muslim. So the problem, my brothers and sisters, is that we are not consistent. We begin, but then we don't remain on the path. We are in high spirit for a few days, and then after that, it becomes boring. And then we leave it in between, and we abandon it. And while we do so many good things, but then unfortunately we indulge in some of questionable activities also. And we cannot control ourselves. That is the only area, my brothers and sisters, where we need to improve. At least my audience, these are all, alhamdulillah, good brothers and sisters. I know almost each and every one that, alhamdulillah, our brothers and sisters are very good. They are knowledgeable, they are striving, they are struggling, they are doing good, and they have been always doing so many good things. They build the masajid, they build the centers, they are involved in so many charitable activities, they are helping their families in a very nice way, they are very good with their extended families, with community, they are donors, they are volunteers, they are good husbands, they are good mothers, good sons and daughters, alhamdulillah. So we have all these good things. Just we need to become more conscious. Just like as we are more conscious about exercise, about our diet, about our medicine, about certain other things. We all know that if we are on exercise, if we are on diet, if we are on some medicine, then we have to stick with it. If we want lasting results, then we need to stick with it. So, 4 points, and that is the conclusion. I'm not going to get into any details. Allah says, Iman, Amal Saleh, Tawasaw bil Haq, and Tawasaw bis Sabr. The first thing, you must have Iman. Because Iman is the foundation, my brothers and sisters. Good actions will, inshallah, give you good results if you have that foundation of Iman. I know many people have questions about that, particularly our youngsters. We address that in those youth gatherings and try to explain to them why Iman is needed. Because some of them, they come to us and they say, oh, I have a Jewish or Christian friend who is better than Muslims. I know these bunch of Muslims, and then I know this Jew, or I know this Christian, and he is much better. He is more God conscious, or he is more clean, honest, or helpful, or whatever meaning these youth, as you know. And so that is important. The character is more important. They want to have character min high iman. Sometimes I know parents in this country are in a very weak position. All of us, I am a parent. और उर्दू में वो फारसी में कहते हैं कि हमारी दाढ़ी जो है वो बच्चों के हाथ में है और बच्चों के हाथ में कैंची है. अब वो बच्चों
मुसीबतों ने पकड़ी हुई है यहाँ से, और हर वक्त खतरा है पता नहीं कब कट जाए. We are living in a time and in a society, this is a reality. That when some parents come to me and they try to ask me to conduct the Sigatun Nikah, and then they will say that, Maulana, but you know, this boy is better than Muslims, which our daughter has chosen. Yes, he is Jew or he is Christian, but I tell you, he is better than Muslims. But my brothers and sisters, this issue, Quran is very clear on that. There are certain concepts where there is no gray area. There is no gray area. And we cannot just decide at our own. Quran is very explicit on this issue of Iman. And wherever Quran spoke about the rewards or Jannat or paradise or any rewards with Allah subhanahu wa ta'ala, every time in Quran Allah mentions Iman first and then Amal Salih after. Every time in Quran, go and open the Quran and go from Fatiha to Nas, and you will see that first Iman, and then on foundation of Iman, Amal Salih. So that's number one. Iman. What is this Iman? Iman, again, I received the other day a call, and every day, by the way, my brothers and sisters, we have a habit of hiding under rug. Many of us, we don't let anybody know what is happening with me or with my children. And we try to hide, and we try to hide, and we are not coming up to build some group, to help each other, to address these issues, to find out the solutions. Young man comes to the parents and he says that I want to marry a Hindu girl. And parents say that you cannot marry a Hindu girl because they don't believe in God, one God, they believe in so many gods, and you cannot marry her. He says, no, I spoke with that girl, and that girl says, I believe in only one God. And to me, that is good enough, that she believes in one God. They ask, does she believe in the Prophet Muhammad and his prophethood? Does she believe in Quran? So that is off the point. To me, only believe in God is good enough. Because she has faith, and faith in God is good enough. If she believes in Allah, she believes in everything. That is not the case. Iman in Allah means with all those other imaniyat. Sometimes Quran gives the list, sometimes Quran mentions a few, sometimes Quran mentions all. This particular ayat which you see, purposely we have written down here. This ayat number 177 of Surah Al-Baqarah is the most comprehensive ayat of Quran, which brings every aqidah, every iman, every value, practice. It's a very comprehensive ayat. So iman in Allah, it's not only that God exists. That's very easy, God exists. But believe that God is only one. Believe in Tawheed. Only believe in God is not enough. Believe in Tawheed. And then a belief that only God can be worshipped or should be worshipped, and nobody else should be worshipped along with God. No shirk. In
very important. Then belief in Prophet and in his ismat, his character, what he brought. And then your belief in Tawheed and Risalat is not complete without belief in Wilayat and Imamat. Wilayat and Imamat, without that, deen is not complete. Only deen gets complete. Al-yawma akmaltu lakum deenakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam deena. Only when there is man kuntu Maula fahaza aliyun Maula. Only a vague belief, I believe in some kind of God, I believe in one God, but I don't believe in Prophet, I don't believe in Quran, I don't believe in his duties, I don't believe in Prophet, I don't believe in what Prophet brought, I don't believe in Imams, I don't believe in Day of Judgment, I don't believe in Hisab and Kitab. This is not Iman. Iman or naqis Iman hai. This is not Iman. Iman has to be complete. Then my brothers and sisters, after Iman is Amal-e-Saleh. Amal-e-Saleh is again a very comprehensive term. Includes every minor and major good deed which one can do. Wajib, mustahab, every action what you do for yourself, for your family, for your neighborhood, for community, for society at large. The charity, speaking truth, standing for truth, speaking against oppression, standing with oppressed. All these are Amal-e-Saleh, Amal-e-Saleh. And we need to do those. Amal-e-Saleh, this is account. So if we will invest our time, our energies in Iman, Allah will give us high return. If we will invest in our Amal-e-Saleh, whatever work we are doing, you are doing noble jobs. Everybody is, alhamdulillah, doing noble jobs. Whether you are teacher, whether you are engineer, whether you are doctor, whether you are working at a local printing shop, whether you are working at a school or college or university or hospital or in a factory or wherever, you are helping the society. This is all our Amal Saleh. But you should do it for good reasons. For Allah subhanahu wa ta'ala. To please Allah subhanahu wa ta'ala. To help the humanity, to help the society, to help the community or society at large. And then Allah will give the high returns. And the beauty again you see, this is the karam of Allah. He says, now if we ask, who will do that kind of business with us, that who can give us high returns? Allah says, do business with me. You will never find a better business party than Allah subhanahu wa ta'ala. You sell to me. You sell me your life. You sell me your mal. You sell me your energy. You sell me your talent. You sell me your services. You sell me your words. You sell me whatever you do. You sell to me. And as they say that, I think you have heard yesterday or the day before yesterday in Pakistan, they are making a new account for investments. And you receive always message 6% milega, 5% milega, 4% milega return. The guaranteed rate which Allah subhanahu wa ta'ala has for everyone, no worries about that, that is 10%. यानी एक के बदले में 10 देगा, ये तो गारंटी। दुनिया में कौन है जो एक के बदले में 10 देता है? और 10 तो मिनिमम 70, 100, 70, 100%, and even more than that. Sky is the limit. So you give me. And then Allah says, now if we ask, who will do that kind of business with us, that who can give us high returns? Allah says, do business with me. You sell to me. You sell me your life. You sell me your energy. You sell me whatever you do. You sell to me. And as they say that, I think you have heard yesterday or the day before yesterday in Pakistan, they are making a new account for investments. And you receive always message 6% milega, 5% milega return. The guaranteed rate which Allah subhanahu wa ta'ala has for everyone, no worries about that, that is 10%. यानी एक के बदले में 10 देगा, ये तो गारंटी।
I will accept and I will give you 700 times more rewards. जिंदगी दोगे जो कि तुम्हारे पास वैसे ही एक दिन चली जाएगी, शहीद बन जाओगे, वहम फीहा खालिदून, जिंदगी शहीद जावेद, एक जिंदगी दोगे, परमानेंट जिंदगी ले लोगे। खालिस नीयत से सूखी रोटी दे दोगे तो जन्नत से कसीदे नाज़िल होंगे सूरहदार की सूरत में। एक सूखी रोटी का रिवार्ड, एक अंगूठी अपने हाथ से उतार के दे दोगे मांगने वाले को तो उसके लिए कुरान में आयतें नाज़िल होती हैं। That is the return, my brothers and sisters. और फिर मजे की बात ये है कि ये जो कुछ हमने उसको देना है ना और उससे बिजनेस करना है, इसमें से हमारा अपना कुछ भी नहीं। यानी कोई ऐसा बिजनेसमैन भी हो सकता कि पहले तो कैपिटल आपको खुद दे, पहले तो वो कैपिटल आपको खुद दे कि ये है जनाब $1 मिलियन, इसके साथ आप मेरे साथ बिजनेस कीजिए और फिर मैं 10% की गारंटी करता हूँ हर सूरत में, और हो सकता है कि 700% भी दूँ और हो सकता है उससे भी ज्यादा दूँ। तो अजीजाने गिरामी, अब देखिए इससे बेहतर बिजनेस और क्या हो सकता है, इससे बेहतर रिटर्न और क्या हो सकती है। If we gave him time, that was his given time. हमारा अपना तो कुछ, हम तो टाइम नहीं इन्वेंट करते नहीं बना। If we gave him money, this was given by him. Whatever we gave him, वो गालिब का क्या शेर है। और हमारे किराम भी यहाँ बैठे हैं और इनको भी ये शेर तो ज़बानी याद होगा, और भी बहुत। गालिब का क्या है, जान भी दी तो दी हुई उसी की थी। अब तो ये है कि हक, जान भी दे दी तो क्या किया, जान भी तो हमारी अपनी नहीं थी, उसी ने दी थी। सबसे बड़ी चीज तो यही है ना जो हम दे सकते हैं। जान भी दे दी तो क्या। यही वजह है कि कुरान में हमारी साइकी को सामने रखते हुए खुदा ने कहा वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो कुछ हमने दिया है उसमें से खर्च करते, ताकि खर्च करते हुए दर्द ना हो, तकलीफ ना हो कि ये तुम्हारा नहीं है, हमारा ही दिया हुआ, हमारा ही दिया हुआ, वी गेव यू, हमारा दिया। इन्वेस्टमेंट माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इससे बेहतर क्या हो सकता है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। और फिर ये कैसा बिजनेसमैन है, वो ये कहता मैं बड़ा बिजनेसमैन हूँ और मुझे तो सिर्फ बड़े बड़े बिजनेस करने हैं, छोटा बिजनेस मुझे नहीं करना। तो यहाँ पे वो ये कई दफ़ा आप रोड पे देखते होंगे, ये जो हीटिंग कूलिंग वाले और इस तरह के होते हैं ना बेचारे छोटे बिजनेसमैन, उन्होंने पीछे क्या लिखा होता है कि एवरी जॉब इज नो जॉब इज स्मॉल, नो जॉब इज स्मॉल, जो जॉब नहीं मिलेगा हम करेंगे। तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं चूंकि इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरी कंपनी इतनी बड़ी है, तो मेरे साथ सिर्फ अंबिया बिजनेस कर सकते हैं, मेरे साथ सिर्फ अंबिया और आइम्मा बिजनेस कर सकते हैं, मेरे साथ सिर्फ औलिया बिजनेस कर सकते हैं, मेरे साथ सिर्फ बड़े पैमाने पे बिजनेस हो सकता है। ऐसा नहीं है। फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, एक जर्रा बराबर भी ला के मेरे बैंक में डालना चाहो और मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहो, तो एक जर्रा भी तुम्हारा लेके तुम्हें पार्टनर बनाने के लिए तैयार है। एक जर्रे के साथ भी मेरे पार्टनर बन सकते हो। एक अंगूठी, एक खुश्क रोटी, एक अच्छी बात, एक अच्छा मशवरा, एक अच्छी नीयत, एक अच्छा बोल, रास्ते में पड़ा हुआ एक कांटा उठा लो, रास्ते में पड़ी हुई रुकावट, पत्थर पड़ा है उसको उठा लो, मेरे पार्टनर मेरे साथ शामिल।
यतीम के सर पे हाथ फेर दो, किसी दुखी और किसी सितम रसीदा से उसका हाल पूछो, दो गले में मोहब्बत और हमदर्दी के उसके साथ बोल दो, तुम्हारी पार्टनरशिप हो जाएगी, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो अज़ीज़ान गिरामी इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। ये फार्मूला अल्लाह ने बताया है, और अल्लाह का फार्मूला जो है सक्सेस का, कामयाबी का, Allah says that only your iman and your good deeds are not going to take you anywhere, because you will be sooner or later influenced by your neighborhood and by your society and by others. वो ईमान क्यों जरूरी है? इसलिए कि ईमान के बगैर जो अच्छा अमल है वो अच्छे वक्तों में तो रहता है, अच्छे वक्तों में तो हर कोई अच्छा होता है, लेकिन इन ट्रेजेडीज, इन डिफिकल्टीज, इन हार्डशिप्स, जब अपना पेट खाली हो फिर भी भूखे को खाना खिलाने के लिए तैयार हो, ये सिर्फ ईमान ये करने के लिए तैयार करता है, ये कोई और चीज तैयार नहीं करती। अच्छे वक्तों में तो हर कोई अच्छा होता है, जब अपना पेट भरा, जेबें भरी हैं, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, तो कौन अंधता बनने के लिए तैयार नहीं? चार पैसे देके हम भी जन्नत के मालिक। लेकिन जब दुनिया नेकी के बदले में आपको दुख देने वाली हो, जब कोई एक्नॉलेज ना करे, जब कोई अप्रिशिएट ना करे, जब आप अच्छी बात करें आगे से सुनने में गाली मिले, और फिर भी आप अपना रास्ता ना बदलें, अपनी कंपनी बंद ना करें, अपने अच्छे काम न छोड़ें, और उन्हीं लोगों को जो पत्थर मार रहे हैं फिर भी आप सर्व करते रहें, ये है वो चीज, ये जो जमानत है कि ये अच्छा अमल जो है वो जारी रहेगा, ये कभी रुकेगा नहीं। वरना बहुत सारे लोग हैं बेचारे बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन कहते हैं कुछ करने के बाद थक जाते हैं, कहते हैं हमने बड़ा अच्छा किया उनके साथ, हमने उनके साथ हमेशा नेकी की, आगे से पलट के उन्होंने हमेशा हमें दुख, अब नहीं कर सकते। जब फोटो नहीं बनते, जब एक्नॉलेज नहीं किया जाता, जब यहाँ से ऐलान नहीं होता, जब यहाँ तमगा नहीं लगाया जाता, जब सर पे ताज नहीं रखा जाता, तो जी एक्नॉलेजमेंट नहीं है, अप्रिसिएशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो फिर हम क्यों करें? ये सब ईमान की कमजोरियां और ईमान की बीमारियां हैं। जो अल्लाह की खातिर करते हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ देते कि उनको एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा, इसलिए कि उनको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, इसलिए कि उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा, इसलिए कि उनको इख्तियारात नहीं दिए जा रहे, बल्कि वो इसलिए करते हैं कि उनका हिसाब किताब तो उस खुदा के साथ है जो हर छोटी चीज भी लिख रहा है और बड़ी चीज भी लिख रहा है। तो हम सब एक वक्त में आके बदल जाते हैं, सब बदलते हैं। मैं सबसे पहले अपना कहता हूँ, मैं आज वो फाइजी नहीं हूँ जो आज से 30 साल पहले था। मैं कई दफा सुनाया करता हूँ, अब वक्त नहीं है, लेकिन मैं जल्दी से, मैं बीमार हुआ स्टूडेंट लाइफ में, और मुझे डॉक्टरों ने बहुत बड़ा शक डाल दिया। उस जमाने में ये यहाँ के आके पता चला कि एज़मा तो कोई बीमारी नहीं, हर बच्चा और हर दूसरा आदमी बीमार है। मुझे वहाँ पे, और हमारे ज़माने में, उस ज़माने में एज़मा एक बहुत बड़ी बीमारी होती थी, दमा। तो मैं अभी 16-17 साल मेरी उम्र थी और मुझे सांस लेने में दुश्वारी हुई। डॉक्टर साहब के पास गया तो डॉक्टर साहब ने चेक किया और कहा कि नहीं आप ठीक हैं। मुझे कोई शौक है आपके पास आने का? अगर मैं ठीक हूँ तो आया हूँ इसलिए कि मुझे सांस नहीं लिया। खैर किसी ने जब बहुत डराया, उस वक्त लाहौर में एक ये हॉस्पिटल होता था गुलबर्ग में, UCH, यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल। यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल बड़ा मॉडर्न अस्पताल, अव्वल तो उस जमाने में गुलबर्ग लाहौर की सबसे
मेरी हालत ये थी कि मैं यूसीएच तो चला गया, मगर चूंकि वहाँ वो अस्पताल ईसाइयों का था, तो मेरी कोशिश ये कि मैं अस्पताल में रहूं मगर सांस ना दूं। दमे का मरीज कि कहीं वो सांस के जो क्रिश्चियंस ने ली और निकाली है, कहीं वो मेरे अंदर न दाखिल हो जाए। और मैं इतना, यानी एक अजीब मेरी कंडीशन कि मैं वहां पे गया तो चला गया डर के, लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं हूं कि यहाँ सारे आसपास में क्रिश्चियन। अल्लाह ने कहा तुम्हें ऐसी जगह भेजूंगा कि तुम्हारा ये सब नखरा वखरा जो है वो दूर हो जाएगा। तो हमारा पस मंजर ये था। और फिर जब हम आए, मौलाना सुलेमान साहब उस वक्त 10 साल के थे। अब पता नहीं इनको कुछ चीज़ें याद होंगी, बहुत अच्छे हाफिज़े वाले हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा इनकी बड़ी बहन को और इनके वालिदैन को याद होंगी हमारी सख्तियाँ। मैं कई दफ़ा अपनी वाइफ और बच्चों को कहता हूँ कि जो चीज़ें मैं किसी को इजाज़त नहीं देता था, अब मैं अपने घर में देख रहा हूँ। यानी जो चीज़ें मुझे कम्युनिटी के औरतों और बच्चों में कबूल नहीं थी, वो मैं अपने घर में देख रहा हूँ। और खुद हमारी अपनी हालत भी अब वो फायजी साहब नहीं रह गए जो 30 साल पहले थे। अब तो लोग हर हलाल हराम का काम करवाने के लिए अगर उनको शहर में कोई आलिम नजर आता है तो फायजी साहब नजर आता है। कहते हैं मौलाना महबूब फैजी साहब ये नहीं कहेंगे, और मौलाना शहजाद साहब भी बहुत शरीफ आदमी हैं, मौलाना सुलेमान साहब भी हैं। बस हमें ये बताया गया है कि अगर तुम्हें ये काम करवाना है तो फायजी साहब के पास चले जाओ, वो ही निकाह पढ़ देंगे, वो तलाक का सिवा जारी कर देंगे, बाकी सब कैसे लिखे। अब मैं देखता हूँ पलट के कि मैं वो आदमी था जो ऑर्थोडॉक्स था, मैं वो आदमी था जो इंतहाई कंजर्वेटिव था। अब मेरी पहचान लिबरल की है, और ये क्या होते हैं आपके, ये मैं भी कह रहा था मॉडरेट, हाँ मैं भी मॉडरेट मौलाना हूँ। तो अजीजान गिरामी, ये सोसाइटी, जिस सोसाइटी में इंसान रहता है उस सोसाइटी का रंग चढ़ता है, और फिर रफ्ता रफ्ता इंसान वो चीजों को कबूल करता है। उसको दूर करने के लिए जो खुदा ने नुस्खा तजवीज़ किया वो ये था कि सिर्फ तुम्हारा अपना ईमान और तुम्हारा अमल साले काफी नहीं है, वातवासौ बिल हक़, तुम सब मिलजुल के हक की आवाज बुलंद करते रहो, हक के परचम को बुलंद रखो, हक की नसीहत और वसीयत एक दूसरे को करते रहो, एक दूसरे को हक बात बताते रहो, एक दूसरे को टोकते रहो, एक दूसरे को रोकते रहो, और एक दूसरे को चैलेंज करते रहो। तो सोसाइटी जो है वो हक के रास्ते पे कायम रहेगी, वरना रफ्ता 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 सारे फायजी साहब बन जाओगे। सलात पढ़िए बाबा। किसी और का नाम लूंगा तो मुझसे मिलना छोड़ देंगे, तो कहरे दरवेश पर जाने खेश। और मुझे ये तस्लीम करने में भी कोई तकलीफ नहीं है कि हाँ हुआ है। तो अजीज़ान गिरामी, कुरान ने बता दिया कि जिस सोसाइटी में रहो लबों को सीख के न रहो, मुआशरे के अंदर अपने मुंह को बंद करके रखो, आंखें बंद करके रखो, आंखें भी खुली रखो, जबान भी खुली रखो, और इश्यूज के ऊपर बोलो, इश्यूज के ऊपर स्टैंड लो, हक और सच कहो, हक और सच सुनो, हक और सच को प्रमोट करो। और अगर तुम हक और सच बोलते रहे, हक और सच का परचम तुमने उठाए रखा, और एक दूसरे को तुम रिमाइंड करवाते रहे एक दूसरे की ड्यूटीज, और अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर और हक बात करते रहे, तो सोसाइटी सही रास्ते पे रहेगी, और कंपनी जो है जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो कंपनी भी खुली रहेगी।
सब्र। और फिर खुदा से बेहतर चीज़ों को कौन जानता है कि जब हक के रास्ते पे चलोगे तो फिर आगे से फूल नहीं मिलेंगे। जब लोगों को हक की बातें बताओगे तो आगे से तुम्हारे गले में आके हाथ तो नहीं डलेगा। जब लोगों को मुंह के ऊपर हक और सच बताओगे तो फिर बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। हक और सच के रास्ते पे खड़े होने से इंसान को महरूमियों का सामना करना पड़ता है, जॉब में छूटते जरा सी बात आती है तो फौरन सवाल लेके आ जाते हैं, हलाल हराम का होता है, जॉब छूट जाएगी और हायर नहीं करेंगे हमें हायर करने वाले, या ये है कि इलेक्शन लूज कर जाएंगे, या ये है कि हमारी पोजीशन खराब हो जाएगी वहाँ पर। लेकिन अजीज़ाने गिरामी, जब आप हक के रास्ते पे चलते हैं, हक का अलम उठाते हैं, हक की बातें करते हैं, तो फिर उसके लिए महरूमियाँ, उसके लिए जॉबों का छूटना, उसके लिए लड़ाई, उसके लिए झगड़ा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को पत्थर मारें, लोग आपको मारेंगे और आपको वो खाना होंगे। और अगर लोग आपका ये हाल हशर नहीं कर रहे, मेरा भी जो हाल हशर आज से 10, 12, 15 साल पहले होता था, आज नहीं हो रहा। आजकल मुझे काफ़ी रिलीफ मिला हुआ, तो उसकी वजह यह है कि मैंने पोजीशन लेना छोड़ दी, वरना मैं वही फायज हूँ। अब पहले की जितनी गालियाँ नहीं पड़ रही, अब पहले के जितने फतवे नहीं लग रहे, अब पहले की जितना, वो सब इसलिए नहीं हो रहा कि मैंने थोड़ा सा हालात के साथ कंप्रोमाइज कर दिया। मैंने कहा कि भाई यार, मैं तो अभी गुजार चुका हूँ, मैं मौलाना सलमान साहब की भी मुश्किलात में खड़ी कर जाऊँ, तो मैंने थोड़ा सा खामोश रहना शुरू कर दिया। तो जब लोग हमारे हाथ चूमने लगे ना और आके हमें अच्छी अच्छी हमारी तारीफें करने लगे और हमें हमारी बुराई ना करें, तो ये ऐसे ही है जैसे इमाम खुमैनी ने कहा था कि जिस दिन अमेरिका ने ईरान के साथ दोस्ती कर ली, उस दिन ईरान अपने रास्ते से हट चुका होगा। जिस दिन अमेरिका ने ईरान के साथ दोस्ती कर ली, उस दिन बुनियादी तौर पे ईरान को अपना जायजा लेना होगा कि हमने अपना रास्ता छोड़ दिया है, जो शैतान बुजुर्ग ने हमारे साथ दोस्ती कर ली है। तो अज़ीज़ाने गिरामी, ये जो जब मोमिनी हम पे बड़े रहम करने वाले और करम फरमा हो जाते हैं और हाथ चूमते हैं और किबला किबला कहते हैं, वो उसी सूरत में कहते हैं कि जब हम हक कहना छोड़ दें, जब हक कहना छोड़ दें। वरना जिन्होंने अंबिया को किबला काबा नहीं कहा, वो आपको क्यों किबला काबा कहते हैं? अंबिया को तो कत्ल करते थे लोग, शहरों से निकालते थे। तो खुलासा ये है अज़ीज़ाने गिरामी, इफ यू आर ऑन द पैथ ऑफ हार्डशिप, अगर हक और सच की बात करेंगे तो फिर सब यहीं से मैं मुतसिल हो रहा हूँ मसाइल के साथ, मैं इसको खत्म करता हूँ। ये नुस्खा, ये फार्मूला, 4 पॉइंट फार्मूला, अगर हम देखना चाहें कोई सक्सेसफुल कंपनी, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, और हम उसके 4 स्टेप्स में जाना चाहें कि जिसने जो ईमान लाए हों, जिन्होंने अमल साले किए हों, जिन्होंने हक का परचम उठाया हो, जिन्होंने हक की खातिर मसाइब बर्दाश्त किए हों और सब्र किया हो, वो अहले बैत मोहम्मद मुस्तफ़ा से बेहतर और कौन से हो सकते, जो सिर्फ ईमान नहीं बल्कि कुल्ले ईमान, और जो सिर्फ ईमान ही नहीं बल्कि बिना इला जो दीन और ईमान की बुनियाद। और अमल साले भी, आप दुनिया का कोई अमल साले सोच के देखें, फर्ज करके देखें, आपको अली और फातिमा और औलाद अली और फातिमा वो अमल साले करते हुए नजर आए। वो अमल साले वाजिबात हों, मुस्तहब्बात हों, हुकूकुल्लाह हो, हुकूकुल इबाद हो, किसी किस्म का अमल सालेह आप सोच के देख लें, अहले बैत मोहम्मद मुस्तफ़ा। और फिर मुआशरे में हक का अलम
ने बुलंद किया है, जबकि पूरा मुआशरा रास्ते से हट रहा था, हट चुका था। तो अज़ीज़ान गिरामी, सबसे पहले वो परचम किसने खड़ा किया है? वो फातिमा ज़हरा ने। सबसे पहला इन्हिराफ जो उम्मत मुस्लिमा में पैदा हुआ, उसको चैलेंज करने के लिए नबी की बेटी उठी। जैसे कहते हैं वातवासौ बिल हक, सोसाइटी के अंदर जो बिगाड़, जो इन्हिराफ पैदा हो रहा था, वो चादर पोश इस शान से घर से उठी। तारीख बताती है जब फातिमा घर से निकली थी ना, तो चादर जमीन पे खत खींचती चली आ रही थी। गुस्से में थी नबी की बेटी, जिस्म जो है वो गुस्से की वजह से उस पे वो थर थर कांप रहा था, गुस्से की वजह से, और चादर जो है वो जमीन के ऊपर खत खींचती थी। नबी ज़ादी मस्जिद में दाखिल हुई, पर्दे के पीछे जाके बैठी। रिवायत में है सबसे पहले तो जब बीबी ने खिताब करना चाहा तो बाबा का जमाना याद आ गया, ये वही मस्जिद है और मैं वहीं बैठी हूँ जहाँ पे आके बैठती थी, मगर उस वक्त यहाँ बाबा होता था, बाबा से बात करती थी और बाबा खुद आके पूछते थे। सबसे पहले तो बीबी की चीख निकली, बीबी ने गिरिया किया। गिरिया को शेयर करने के बाद जब सब मुतवज्जे हुए तो फिर बीबी ने अपना खुतबा शुरू किया और फिर इस्लाम की पूरी तारीख 23 साल वो बीबी ने वहां पे सामने बयान किया। ऐसा खुतबा के उलमा ने कहा है कि अगर बताया ना जाए कि ये सईदा का खुतबा है तो जो भी उसको देखे और पढ़ेगा वो उसे अली का खुतबा समझेगा। बल्कि बाज़ उलमा ने तो यहाँ तक कहा है कि फातिमा का ये खुतबा अली के खुतबात से भी ज्यादा फसाहत और बलागत में आगे बढ़ा हुआ। इस शान के साथ फातिमा ने हक का परचम बुलंद किया, हक की आवाज को बुलंद किया। लेकिन जब आगे से उम्मत में, और अभी पैगंबर का कफन मैला नहीं हुआ, अभी तो जुमा 8 दिन भी नहीं हुए, जब फातिमा को झुकलाया गया ना और फातिमा को कसम खा के ये कहना पड़ा कि मुझे खुदा की कसम है मैं झूठ नहीं बोल रही, यानी और जिस पे आयतें तस्दीक नाज़िल हुई हो वो तुम्हारे नबी की बेटी है, उसे कसम उठा के ये कहना पड़े कि मुझे खुदा की कसम है मैं झूठ नहीं बोल। अजीजों, वो पसीनों का टूटना और वो पहलू का जख्मी होना वो फातिमा के लिए छोटी मुसीबत थी। फातिमा का झुकलाया जाना मस्जिद नबवी के अंदर फातिमा के लिए कोई मुसीबत नहीं। फातिमा अपना इत्माम हुज्जत करके जब घर में आ गई, अजीजों 2-4 दिन की बात है कि ये आ गए दरवाजे पे आके धमकियां दी, और धमकियां देने के बाद बाज़ रिवायात में जैसा कि उलमा ने जिक्र किया है कि आग लेके भी आए। और ये घर किसका है? जरा तसव्वुर करें, ये नबी की बेटी का घर है, ये मस्जिद का पड़ोस है, ये वो दरवाजा है जिस पे रसूल आके यहाँ पर सलावत पढ़ते थे, कुरान की आयतों की तिलावत करते थे। उस घर पे आ जाते हैं और आके कहते हैं फातिमा को दरवाजे पे बुला के कि इन लोगों को घर से निकालो, अली से कहो कि बाहर आके बैत करें, वरना हम इस घर को जला देंगे, इस घर को जला देंगे। जब घर के जलाने का नाम सुना ना तो फातिमा कहती है मगर इस घर में मैं भी रहती हूँ और मेरे रसूल के और तुम्हारे रसूल के बेटे हसन और हुसैन भी रहते हैं, छोटे बच्चे मासूम भी रहते हैं। जवाब दिया गया इन, अगरचे वो बच्चे भी रहते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम घर को जलाएंगे। गुफ्तगू में तल्खी पैदा हुई। अजीजान गिरामी रिवायात में जो मिलता है कि दरवाजे को इस बदबख्त ने धक्का मारा, पीछे फातिमा खड़ी हुई है, दरवाजे के पीछे फिर एक हिसार है,
परवरदिगार तिलावत कुरान मजीद, मजलिस अज़ा और जो दीगर कारवाए खैर अंजाम दिए गए हैं, इन सब का सवाब बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद मरहुमा सैयदा हलीमा रिज़वी बिनते सैयद नियाज़ शाह रिज़वी की रूह को इसाल फरमा। परवरदिगार मरहुमा के दर्जात को बुलंद फरमा। परवरदिगार मरहुमा को जवारे मोहम्मद वाले मोहम्मद में जगह फरमा। परवरदिगार मरहुमा को शफ़ाअत हज़रत ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा नसीब फरमा। परवरदिगार उनके ख़ानदान के और भी जितने मरहूमीन हैं सबकी मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार सैयद के वालिद को तूल उम्र और सेहत और सलामती अता फरमा। परवरदिगार इनके जो भी मौजूदीन हैं उनको सबको सेहत और सलामती अता फरमा। इनकी दुआओं को मुस्तजाब फरमा, हाजात को पूरा फरमा, मुश्किलात को बरतर फरमा। जो भी मोमिन व मोमिनात मजलिस में हाजिर हुए हैं परवरदिगार सबके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार मौजूदीन को सेहत व सलामती अता फरमा। हमारे बीमारों को शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फरमा। परवरदिगार हमारे जवानों की हिफाजत फरमा। परवरदिगार हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा। मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। परवरदिगार इस पर जिन लोगों ने भी तेरे दीन का परचम उठाया हुआ है परवरदिगार उनकी हिफाजत फरमा और दुश्मनान इस्लाम को ग़ालिब व ख़ासिर फरमा। परवरदिगार जितने भी दहशतगर्द हैं दुनिया में फैले हुए वो खुद या उनके जो भी पुश्तपनाह हैं परवरदिगार सबको ज़लील व रुसवा फरमा और परवरदिगार उन सबको तबाह व बर्बाद फरमा और सुल्तान आदे का जल मौलाना फरमा रहे हैं कि उनकी वालिदा की तबीयत बहुत ख़राब है और भी कई मोमिनीन ने कह रखा है दुआ शिफा के लिए, तो इनकी वालिदा और जुमला मरीज़ मोमिनीन मोमिनात की सेहत सलामती और शिफाए कामिल व आजिल के लिए आप सब मिलकर 3 मरतबा बावाज़ बुलंद सलावत करें। अज़ीज़ान गिरामी, बस मजलिस ख़त्म हो गई। हम इजाज़त पढ़ने से पहले एक